बच्चों हमारे पास जो एक चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए वो है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेनो अल्केन्स। ठीक है ना, एक ये चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेनो अल्केन्स। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेनो अल्केन, देखें ये एमसीक्यूज में आपके काम आ सकती है। ठीक है ना, तो you need to keep remember this, the reactivity of halogenoalkanes. So you need to remember that the rate of nucleophilic substitution reactions, right, whatever the nucleophilic substitution reaction you have, if there is a chlorine, if there is bromine, if there is iodine, whatever the halogen over there, you need to keep remember the rate of nucleophilic substitution of different halides actually containing alkyl groups is different for different halogens, right? For suppose if you have CH3Cl, if you have CH3Br, if you have CH3I, and if you are going to react them with like NaOH aqueous, so there are different rates for these different halogenoalkanes, right? You need to keep remember that this is alkyl chain. Whenever this CH3 or a CH3, CH2, whatever the carbon chains known as alkyl chain. This is alkyl chain, right? So whenever I use R, you need to keep remember this. This is alkyl chain. So if I'm writing this RCl, right, or I'm writing this RBr, if I'm writing RI, so all these things are same, right? You need to keep remember, bacho, the fastest one will be RI, right? Then RBr, and then RCl. This is the order of their rates, right? सबसे fastest आपके पास क्या होगा, जिसमें आयोडीन होगा, उस रिएक्शन का रेट सबसे फास्टेस्ट होगा, सबसे फास्टेस्ट। ठीक है, why? This is all because of the hydrolysis, right? You can say that this is all about the hydrolysis of the bond, right? Hydrolysis of bond between carbon and halogen. कार्बन और हैलोजन के दरमियान जो बॉन्ड है ना, we know that ये बॉन्ड टूटता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो ये हाइड्रोलिसिस कहलाता है ना, बिकॉज अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी अकर ओवर देयर। सो जब ये टूटेगा तो दो के दो इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, आपके पास ब्रोमीन के पास चले जाएंगे, so it will be negative and it will be positive. So this will be hydrolysis. This is an unequal sharing of electron after bond breaking. This is what hydrolysis. तो ये जो बॉन्ड टूटता है, इस बॉन्ड को टूटने के लिए अगर एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, then the rate of reaction will be slower. अगर इस टूटने के लिए एनर्जी कम चाहिए होगी, then the reaction will be faster definitely, right? So that is why ये आपके पास जो, अगर फॉर सपोज आप बात करें किसकी, कार्बन और आयोडीन के बॉन्ड की, अगर आप बात करें कार्बन और ब्रोमीन के बॉन्ड की, अगर आप बात करें कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड की, और कार्बन और फ्लोरीन के बॉन्ड की, सो कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड होता है, इसको तोड़ने के लिए 240 एनर्जी चाहिए होती है, और कार्बन और ब्रोमीन वाले को 280, कार्बन और क्लोरीन वाले को 340, और सबसे ज्यादा कार्बन और फ्लोरीन वाले को चाहिए होती है 485। सो यू कैन सी दिस दैट इसका बॉन्ड तोड़ना कितना आसान है, थोड़ा सा मुश्किल इसका, थोड़ा सा मुश्किल उसका, और सबसे ज्यादा मुश्किल इसका। So that is why the rate is going to be decrease. That's why you can say that the rate of reaction decreases because the energy required to break the bond is going to be increases. Is that clear, बच्चों? जी sir. So you can say that is why fluorocarbons, that is why fluorocarbons are generally inert, or you can say that are almost inert. ठीक है ना, वो इतनी आराम से नहीं टूटेंगे, तो उनको आप कह सकते हैं they are generally inert. Is that clear, every one of you? You can take a picture of this. Done, बच्चों?
Yes, sir. Then one more thing is, if you talk about the breakdown of this bond, so it is actually heterolysis. So it will make it easier for us to identify or to distinguish between like chloro, bromo, or iodo compounds. So if you want to distinguish between halide salts, so you can even do this as well. अगर आपको halide ions या halide salts को identify करना है, distinguish करना है, so you can again use this phenomena, right? You can see this when you add them into the water or in alkali. So you will see that these compounds, when you break them out with alkalis, for suppose आपके पास है CH3Br ना, अगर आपने इसको NaOH के साथ heat किया है, so we know that Br is going to be substituted by OH, and this NaOH should be aqueous for this purpose, right? And we will have what? We will have NaBr to form, or definitely when there is water, so this will be bromide ion. And if it will be chloride, so it will give you chloride, and if it will be iodide, so it will give you iodide ion, right? So whenever you are having any unknown sample of what? Any halogenoalkane. So you can do what? You can just react them with aqueous sodium hydroxide in the presence of a little bit heat. So you will see that there will be a salt form, NaCl, NaBr, NaI, and they definitely dissociate in water and they will produce iodide ion, chloride, and bromide ions. You can then add what? You can acidify with nitric acid. You can acidify with nitric acid and then add aqueous silver nitrate. If you remember this in your O levels, this is actually the test for halide ions. This is actually the test for halide ions. So in this way, you can identify this if by adding silver nitrate, the white precipitates forms. So it will confirm this is chloride ion. If there will be pale yellow precipitates, so it will confirm that this is a bromide ion, right? And if there will be iodide, so it will show you dark yellow precipitates. And if you want to confirm them more, so even you can use dilute ammonia. Dilute ammonia can dissolve this, can dissolve white precipitates. अगर white precipitates dilute ammonia से dissolve हो गए, so it's confirmed कि chloride है. लेकिन अगर आप ब्रोमाइड में डालते हैं तो डाइल्यूट से नहीं होते हैं, ये कॉन्सेंट्रेटेड से होते हैं. सो यू नीड टू रिमेंबर, इफ द precipitates are going to dissolve by concentrated ammonia, then it will be bromide. क्योंकि समटाइम ऐसा होता है ब्रोमाइड का कलर बहुत लाइट येलो टाइप होता है, तो कभी कभार आपको प्रॉब्लम हो सकती है व्हाइट में और येलो में आइडेंटिफाई करने में, और हो सकता है कि येलो और डार्क येलो में आपको आइडेंटिफाई करने में मसला हो. सो यू कैन यूज दिस कंफर्मेशन टेस्ट. एंड ना तो ये डाइल्यूट में डिसॉल्व होंगे और ना ही ये कॉन्सेंट्रेटेड में होंगे, तो आयोडाइड वाले तो किसी में भी नहीं होते. सो दिस इज अ फर्दर टेस्ट इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई इट, राइट? चलिए इसको भी अपने पास एक पिक्चर बनाकर सेव कर लीजिए. डन बच्चों? जी. चलें अब इसके बाद कुछ एमसीक्यूज और कुछ थ्योरी में आपको पुराने क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आपको यूजेस की बात की जा रही होगी. So if you talk about the uses of halogenoalkanes, so they are also very much important. So let's talk about some uses of halogenoalkanes. Let's see कि हमारे पास कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं. So the very common example of halogenoalkane is this. This is carbon tetrachloride, right? And this is one of the halogenoalkane and a compound having halogens, right? So what is the use of this? The use of this, you can simply say that it can be used as a solvent. It can be used as a solvent, right?
And if you talk about property of this, so this is actually, you can say that non-polar liquid. This is non-polar liquid. Even the bond is polar, but the molecule is non-polar. We will talk about this in bonding, right? If you just focus over there, then carbon and chlorine, this bond is polar. But right now we have 4 bonds with 4 different chlorines. So the dipole is actually canceling each other. So that is why the overall molecule is non-polar, right? Is that right, Bacho? Yes, sir. Then this is the first one. If you talk about another compound of this, you can say that we have one more compound which is known as PTFE, right? This is one another compound. You can say that PTFE. ठीक है ना? This is one of the, you can say that compound in which we have fluorine, right? And it's stronger, right? Because fluorine or carbon का bond बहुत strong होता है, and this is tetrafluorine, 4 fluorine होंगे इसके अंदर, so it is more stronger. 4 carbon और fluorine के bond वो टूट ही नहीं सकते. That is why we use this in non-stick pans. हम इसको कहाँ यूज करते हैं? वो जो घरों के अंदर non-stick pans आते हैं उसके अंदर आप इसको यूज करते हैं. अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज लाइक इट इज नॉन टॉक्सिक हो सकता है क्योंकि इसको कुछ होना नहीं है, ठीक है. और उसके अलावा जो है ये रेजिस्टेंट टू जो है फ्रिक्शन हो सकता है, ठीक है ना. उसके बाद भी हैव CFCs, इसके अंदर कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन हो सकते हैं, ठीक है ना. ये आपके पास एरोसोल स्प्रेज में यूज होते हैं, ठीक है ना. Aerosol sprays, ठीक है. And they are volatile and odorless. Volatile मतलब they can evaporate at room temperature and pressure, and they are odorless, यानी कि उनका कोई odor नहीं होता है, right? Then we have also some you can say that CFCs जो कि refrigerants के तौर पे भी यूज होते हैं. So आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, refrigerants, ठीक है ना. मैंने स्पेलिंग शायद गलत लिखी है, REFRIGERAN, refrigerants, right? उसके बाद आपके पास PVC is one of the very important use of this. ये जो हमारे घरों के अंदर वाटर पाइप्स होते हैं व्हाइट वाले, वो PVC के बने हुए थे, polyvinyl chloride. It is one of the polymer in which we have chlorides, right? इसमें हम क्या यूज, ये पाइप्स में यूज होता है, ठीक है ना. वाटर पाइप्स में यूज हो सकता है. And this is hard polymer. Right? And chloroethane आपके पास जो होता है, chloroethane, CH3 CH2Cl. This is chloroethane. It can be used as anesthetic, right? मैंने उल्टा लिख दिया. Chloroethane, CH3 CH2Cl. इसका यूज क्या है? It can be used as anesthetic, ठीक है ना. और इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है. So these are the just common use of these compounds in which chlorine, fluorine या bromine is present. So you can use them. और अगर वो आपसे पूछे any use of that, you can write like this. ठीक है बच्चों? Okay, sir. Just take a picture of this, बच्चों. चलें, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर. और जो नेक्स्ट चीज है वो है एक्चुअली इनका पॉल्यूशन में अमल दखल. There is a connection of these gases and pollution as well. So let's talk about the main pollutant actually. So you need to keep remember that they are main pollutants that are responsible for the depletion of ozone layer, and they are CFCs, right? CFCs are the main, you can say that they are the main things who you can say that contribute in the ozone depletion. They break down
the ozone. They deplete the ozone, right? You need to keep remember this. CFCs are going to do this. CFCs के अलावा जो आपके पास होते हैं, can even say that जो NO2 और NO होते हैं, they are also the part of, you can say that कि ये भी cause करते हैं आपके पास ओजोन की डिप्लेशन. इस तरह मीथेन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी, a lot of things जो कि ओजोन लेयर को डिप्लेट कर सकती हैं. But right now we are talking about the compounds having chlorine, bromine and iodine. तो और जो चीजें हैं उनके बारे में बात करना नहीं चाह रहा. Right now we are talking about CFCs. इसके बाद हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर हैलोजेंस मौजूद है. ठीक है हिश्मा, राइट? बहुत सारे हो सकते हैं, मीथेन भी हो सकती है. मीथेन में हैलोजन नहीं है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, NOx तो मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया क्योंकि अभी हम आगे जाके इसकी बात करेंगे. सो दैट्स व्हाई. ठीक है, अब देखें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं आपके पास, जिसके अंदर क्लोरीन और फ्लोरीन हो, ठीक है ना, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास इनके अंदर जो क्लोरीन होती है, क्लोरीन निकलती है बाहर, क्लोरीन बाहर निकलती है फ्री रेडिकल के तौर पर. तो ये ओजोन के मॉलिक्यूल को क्या करती है, तोड़ देती है. जस्ट लाइक दिस. फॉर सपोज मेरे पास है एक मॉलिक्यूल CF3Cl. ये एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, मैंने ये कहीं यूज किया रिफ्रिजरेंट के तौर पे, या मैंने इसको एरोसोल में यूज किया. तो क्या हुआ, इसमें से कार्बन और फ्लोरीन के जो बॉन्ड है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इट कैन नॉट ब्रेकिंग डाउन. बट इसमें से क्लोरीन मॉलिक्यूल रेडिकल जो है ना टूट कर निकल गया किसी भी तरह. फॉर सपोज यूवी लाइट वजह से टूट के निकल गया. ठीक है ना, ये जब टूट कर निकला तो आपके पास क्या हुआ, या कोई और सभी, जैसे फॉर सपोज अगर ये कंपाउंड नहीं है, CF2Cl2 है, ठीक है ना, तो इसमें से भी फॉर सपोज अगर क्लोरीन निकालें तो वो इस तरह निकल सकता है. ठीक है, अब होता क्या है, ये जो क्लोरीन रेडिकल्स हैं ये जाकर ओजोन लेयर पर अटैक करते हैं. लाइक इट इज O3, so chlorine radical will attack on this. In this way you will have ऑक्सीजन गैस बन जाएगी, और साथ साथ आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा ClO रेडिकल. ठीक है ना, अब ओजोन टूट गई और आपके पास ऑक्सीजन बन गई, एंड ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल मॉलिक्यूल देन O3. तो वो फिर दोबारा से ओजोन बनना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है. ये नेचुरल प्रोसेस है, खुद ही होता है, हम बना नहीं सकते उसको. ठीक है, अब ये जो ClO होता है, इट्स अगेन इट्स अ फ्री रेडिकल, इट्स हाईली रिएक्टिव. तो आपके पास क्या होता है, ये खुद भी आपके पास टूट सकता है, मतलब Cl में दोबारा से टूट जाएगा. जैसे अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं तो दो क्लोरीन रेडिकल दोबारा से बन गए और आपके पास ऑक्सीजन गैस एक और बन गई. अभी जो क्लोरीन रेडिकल है ये दोबारा से ओजोन पे अटैक करेगा. इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा, और हो सकता है अगर दो क्लोरीन आपस में मिल जाए तो इट विल बी स्टेबलाइज. ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल में यू नीड टू रिमेंबर दिस इक्वेशन कि वो ओजोन पे अटैक कर उसको किस तरह तोड़ता है. ठीक है बच्चों? Yes, sir. और ये सारा काम जो हो रहा होता है ये कहाँ होता है बच्चों? यू नीड टू कीप रिमेंबर, इट्स ऑल अबाउट stratosphere. It is a part of atmosphere. ठीक है ना, it's one of the part of atmosphere where the ozone layer is present. ये वहां पर सारा काम हुआ. ठीक है बच्चों? And it's all about due to the UV light. Right, every one of you? Yes, जी sir. सर. Any problem that you want to ask? ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करें फ्लोरोअल्केन्स की, इफ यू टॉक अबाउट फ्लोरोअल्केन्स, सो आई टोल्ड यू दैट फ्लोरोअल्केन्स जो होते हैं उनका जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है उनका. तो उनके बॉन्ड की अगर आप बात करें तो कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है इट्स वेरी स्ट्रांग. इसकी एनर्जी कितनी है? 485. इस वजह से जो भी क्लोरो आपके पास फ्लोरो कंपाउंड्स होते हैं, दे आर वेरी, you can say that stable and they are very inert. So that is why हमने उसको देखा कि हम घरों के अंदर जो है जो पैन्स इस्तेमाल करते हैं नॉन स्टिक पैन्स, वो किसके बने होते हैं? टेट्रा फ्लोरो के बने होते हैं, कार्बन के 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड होते हैं. ठीक है, यू नीड टू कीप रिमेंबर इफ यू टॉक अबाउट CFCs, तो उसमें जो ओजोन लेयर का मेन किरदार है ना, जो मेन किरदार क्या है कि जो ओजोन लेयर को तोड़ रहा है वो है क्लोरीन रेडिकल. सो इफ यू वांट दैट कि यार इसमें से ना अगर हम क्लोरीन हटा दें, सो दिस इज अ गुड थिंग कि हम अपने अर्थ को बचा सकते हैं. फॉर सपोज नाउअडेज वी आर यूजिंग HCFs. दिस इज व्हाट? हाइड्रोजन, कार्बन एंड फ्लोरीन, राइट? सो this is not chlorofluorocarbon, this is hydro or fluorocarbons, right? This is hydrofluorocarbons.
जिसके अंदर आपके पास क्लोरीन है ही नहीं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। आप देखें कि जो क्लोरीन है उसका फ्री रेडिकल कॉज कर रहा है, उसका फ्री रेडिकल कॉज कर रहा है क्या, ओजोन की डिप्लेशन। तो हमने उसमें से क्लोरीन ही हटा दिया। अब जो हम कंपाउंड यूज करते हैं रिफ्रिजरेंट्स के तौर पे या एरोसोल्स के तौर पे, उसको अंदर HCF हम यूज करते हैं, ठीक है ना। या एक और होता है, वो होता है आपके पास HFC, यही होता है, HCFC भी होता है, उसके अंदर क्लोरीन होती है बट थोड़ी सी कम होती है, वो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसको मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो उसको छोड़ दें। एक HCFC भी है जिसमें क्लोरीन की क्वांटिटी बहुत कम कर दी गई है, तो वो भी यूज कर सकते हैं, बट स्टिल क्लोरीन इज ओवर देयर, सो द पॉसिबिलिटी इज ओवर देयर, राइट। देन फ्लोरोअल्केन्स, दे आर हाईली स्टेबल कंपाउंड्स। उसके अंदर जब फ्लोरीन ही होगा खाली और हाइड्रोजन और कार्बन का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो भी इतने आराम से नहीं टूटता। कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है, वो भी इतने आराम से नहीं टूटता। तो ये बड़े आराम से हम यूज कर सकते हैं, यूवी लाइट के प्रेजेंस में इनका बॉन्ड नहीं टूटेगा, दे आर स्ट्रॉन्गर, दे आर स्टेबल। डेफिनेटली आपकी जो अर्थ है उसके अंदर जो ओजोन लेयर है उसको इफेक्ट नहीं करेगी। इज दैट क्लियर एवरीवन ऑफ यू? Yes, sir. हम Yes, sir. हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन यूज करते हैं बच्चों इन प्लेस ऑफ CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हम पहले यूज करते थे रिफ्रिजरेंट्स के तौर पर। अब हम हाइड्रोजन फ्लोरोकार्बन यूज करते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जिसके अंदर क्लोरीन है ही नहीं। जब क्लोरीन होगी नहीं तो उसका फ्री रेडिकल नहीं बनेगा, जब उसका फ्री रेडिकल नहीं बनेगा तो डेफिनेटली आपके पास ओजोन डिप्लेट नहीं होगी। इज दैट क्लियर एवरीवन ऑफ यू? Yes, sir. So here the chapter is now officially finished. ठीक है भाई बच्चों, यहाँ पर